Hey guys, this is Soumya and I welcome you back to my channel Colors of Life with Soumya. मैं इस चैनल में हर हफ्ते आपके लिए न्यू एंड क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड आइडियाज लेकर आती हूँ. सो इफ इन केस यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. और आज मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्वीट और बहुत ही क्यूट किचन डेकोर DIY बनाऊंगी. मैं तो इसे एज अ किचन डेकोर आइडिया बनाने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू प्लेस इट इन माय किचन. बट अगर आप चाहो तो आप इसको एज अ फ्रिज मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हो और अगर चाहो तो किसी और प्लेस में भी डेकोरेट कर सकते हो. सो विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो. So guys, for this DIY I have taken here an MDF cutout. आप चाहो तो MDF बोर्ड के जगह पे प्लाई बोर्ड या नॉर्मल कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हो. You can take any cardboards of any shape, any size, it doesn't matter. मेरे पास यही था तो मैंने यही यूज़ किया है. Now what I'm going to do is that I'm going to make a pencil sketch on this MDF board और उसके बाद मैं clay work करूँगी उसके ऊपर. क्योंकि मैं ये किचन डेकोर DIY बना रही हूँ, सो आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ बॉबल हेड साउथ इंडियन शेफ. So once the pencil sketching is done, I'll now use molded clay to give 3D effect. So I will add clay to only very selected items like the food on the tray, the spatula, the mustaches of the chef and his eyebrows. So 3D वर्क हो जाने के बाद जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम इसके ऊपर करेंगे फटाफट से पेंट. और पेंट करने के लिए मैं यहाँ एक्रेलिक कलर्स यूज़ करूँगी. बट उससे पहले सबसे पहले जो मुझे करना है वो है कि मैं बेस को जेसो से कलर करूँगी. क्योंकि जेसो वैसे मुझे पहले ही यूज़ कर लेना चाहिए था पर मैं भूल गई हूँ. तो अब मैं एक सिंगल कोट ऑफ जेसो अप्लाई करूँगी और उसके बाद एक्रेलिक कलर से कलर करना स्टार्ट करूँगी. यहाँ मैं बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए पिंक कलर अप्लाई करूँगी और उसके बाद मैं फ्लैश कलर बनाऊँगी बाय मिक्सिंग वाइट, लिटिल बिट ऑफ क्रोम येलो एंड ऑरेंज. और उसी कलर की लाइट और डार्क शेड से मैं इस कैरेक्टर का जो फेस, हैंड और बॉडी है वो पेंट करूँगी. So once the base coat of the main element is done, अब मैं उसी कलर का थोड़ा सा डार्कर शेड लूँगी और उससे मैं लाइट एंड शैडो क्रिएट करना शुरू करूँगी. कपड़ों के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ क्रीम कलर बाय मिक्सिंग लिटिल बिट ऑफ येलो विथ लॉट ऑफ वाइट
एंड देन फिर उसी से मैं उसका शेड भी दूंगी और बॉर्डर्स पे मैं क्रोम येलो से हाईलाइट करूंगी। So once all of this is done, I'll now start coloring the food tray. सबसे पहले जो बनाना लीफ है उसको ग्रीन के डिफरेंट शेड से कलर करूँगी ताकि लाइट एंड डार्क इफ़ेक्ट अच्छे से पता चले। और उसके बाद जो सांभर और चटनी के जो बोल्स है वो कलर करूँगी और डोसा कलर करूँगी। So once the coloring is done, now it's time to highlight the entire bobblehead character. और इस character को highlight करने के लिए what I'm going to do is I'm going to use black color and draw an outline of this entire character. I'll start with the eyes. मैं पहले eyes बनाऊंगी, फिर nose, face, ears और फिर धीरे धीरे entire body को black color से highlight करूंगी and see how beautiful it will turn out to be. And then at the end, to add some highlight to the entire DIY, I will first of all create a darker shade of pink and make a light and dark pattern on the backdrop, and on top of that मैं white और pink color से छोटे छोटे patterns बना दूंगी backdrop पे। And last but not the least, of course I'll add a coat of varnish when the entire paint dries up. एंड फाइनली इसके टॉप पे मैं फेविकॉल की मदद से एक जूट रोप टाई कर दूंगी। सो इस तरह से हमारा बॉबल हेड साउथ इंडियन शेफ बिल्कुल रेडी है। आप चाहो तो इसे एज अ किचन डेकोर यूज़ कर सकते हो और इवन यू कैन यूज़ इट एज अ फ्रिज मैग्नेट। सो हियर इज़ द फाइनल आउटपुट।